स्टूडेंट्स होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने और एक टॉपिक आपके लिए चूज़ किया है, वो जो फेमस है, जो नया कंसेप्ट है एजुकेशन की फ़िलासफ़ी में, उसका नाम है एक्जिस्टेंशियलिज्म। तो आज हम इस वीडियो में एक्जिस्टेंशियलिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिस्कस करेंगे और इसके जो एक्सपोनेंट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्जिस्टेंशियलिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म जो है, एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ ए फिलासफी दैट एम्फेसिस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले ये बात करता है इन्हीं चीज़ों के बारे में, जैसे इंडिविजुअल की जो एग्जिस्टेंस है, या हम इसमें बात कर सकते हैं, हाँ, इंडिविजुअल की जो एग्जिस्टेंस है, individual existence, freedom and choice. It is a view that the human defines their own meaning in life and try to make rational decisions despite existing in an irrational universe. It focuses on the question of human existence and the feeling that there is no purpose of explanation at the core of the existence. It holds that as there is no God or any other जो है फोर्स दैट ओनली वे टू द एनकाउंटर। तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में इसका ज़्यादा फोकस है, इंडिविजुअल एक्सटेंस, फ्रीडम, चॉइसेस पे है। अब है इसका और एक है, इसमें दूसरा और एक स्लाइड मैंने रखा है आपके लिए, वो ये है एक्जिस्टेंशियलिज्म ऑरिजिनेट्स विद द 19th सेंचुरी फिलोसफर्स। इसमें जो सॉरेन कीकरगार्ड है एंड फ्रेडरिच जो है नीट्शे, एंड ऑल्दो नीदर यूज्ड द टर्म इन देयर वर्क इन 1940s and 1950s, French existentialists such as Jean-Paul Sartre, Albert Camus 1930 to 1960, and Simon de Beauvoir 1908 to 1986 wrote scholarly and fictitious works that popularized existential themes such as dread, foreboding, alienation, absolute freedom, commitment, and nothingness. ये आपको यहाँ से दिख रहा है। इसके बाद है, इसमें है जो सॉरेन कीकरगार्ड है जनरली कंसिडर्ड टू बी हैव बीन द फर्स्ट एक्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थ्रू दो ही डिड नॉट यूज द टर्म एक्जिस्टेंशियलिज्म। ही प्रपोज दैट ईच इंडिविजुअल, नॉट सोसाइटी और रिलीजन, इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मीनिंग टू लाइफ एंड लिविंग इट पैशनेटली एंड सिंसियर। तो ये है इसमें। उसमें उसने बोला है, ये जो इंट्रोडक्शन क्या है, जीन पॉल सार्टी जो है एक्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, ये वाली टर्म किसने दिया है, जीन पॉल सार्टी ने। एक्जिस्टेंस मीन्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर इंडिविजुअल इज दैट दे आर इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली एक्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियस बीइंग एसेंस rather than what labels, roles, stereotypes, definitions or other preconceived categories in the individual field. Thus human beings through their own consciousness create their own values and determine a meaning to their life. ये जो है जीन पॉल सार्टी, उसमें इसका है Sartre's writes in his work existentialism is a humanism. Man first of all of existence encounters himself, surges up in the world and defines himself after world. Of course, the more positive theoretical aspect of this is also implied. A person can choose to act in a different way and to be a good person in a state of cruel person. Here it is also declared that since humans can choose to be either cruel or good, they are in fact neither of these things essentially. तो ये डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कि जो इसके जो की थीम्स ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म है, एब्सॉर्ड द आइडिया हियर इज दैट देयर इज नो मीनिंग इन द वर्ल्ड बियॉन्ड व्हाट मीन्स वी गिव इट। दिस मीनिंगलेसनेस also encompasses the unfairness of the world. This contrasts with the notion that bad things don't happen to good people. To the world, metaphorically speaking, there is no such thing as good person or a bad person. What happens, and it just be as well happens to good persons to be a bad. तो ये है इसमें इम्पॉर्टेंट, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें है एज ए, उसको बोलते हैं फैक्टिसिटी, मीन्स is both as a limitation and a condition of freedom. It is a limitation in that a large part of one's facticity consists of things one could not have chosen, birthplace, etc. But a condition in the sense that one's values most likely depend on it. However, even through one's facticity is set in stone as being past or instant, it can't be understand a person. As an example, consider two men, one of whom has no memory of his past and the other remembers everything. They have both committed many crimes, but the first man, knowing nothing about this, leads a rather normal life, while the second man, feeling trapped by his own past, continues a life of crime, blaming his own past, trapping him in his life. There is nothing essential about his committing crimes, but they ascribes this meaning to this. तो इसमें है, हाँ, ये है
उसमें another aspect of the existential freedom is that one can change one's values, thus one is responsible for one's values regardless of the society values. The focus of freedom in existentialism is related to the limits of the responsibility one bears as a result of one's freedom. The relation between the freedom and the responsibility is one of the interdependence. तो ये भी इसका मेन पॉइंट है इस एग्जिस्टेंशियलिज्म का. उसके बाद है ऑथेंटिसिटी के बारे में. ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व्स द आइडिया दैट वन हैज़ टू क्रिएट वन सेल्फ एंड देन लिव इन अकॉर्डेंस with this self. The authentic act is one that is in accordance with one's freedom, of course, as a condition of freedom in facticity. This includes one's facticity, but not the degree that this facticity can in any way determine one's choices, in the sense that one could then blame one's background for making their choice one made. The role of ethnicity in relation to the ethnicity involves letting one's actual values come into play when one makes a choice instead of like kindergarten aesthetic choosing randomly, so that one also takes responsibility for the act instead of choosing either or without allowing the options to have different values. तो ये भी इसमें important है. उसमें है हाँ उसमें फिर ये है the key themes of this is the other and look the other when written with the capital O is a concept more properly belongs to the phenomenology and is account for the intersubjectivity. The experience of the other is the experience of another free subjects who inhabits the same world as a person does. In existentialism it also acts as a kind of limitation of the freedom. तो ये important है इसमें और एक है जैसे थी यहाँ पर अदर एंड लुक में है ये वाला आप देख सकते हो. इस स्लाइड में कुछ हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग है ये आप खुद भी देख सकते हो इसमें. इसके बाद है इसका और भी ये कंटिन्यू है यहाँ से आप देख सकते हो. ये स्लाइड भी आप देख सकते हो. एंगस्ट एंड थ्रेट ये इन्हीं की टर्म है, उन्होंने इसको डिफाइन किया है. फिर है और एक है ये भी इन्हीं का है एग्जिस्टेंशियलिज्म वालों का. ये है डिस्पायर के जो बारे में एक्सिस्टेंशियलिज्म जनरली डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ होप, मोर स्पेसिफिकली द लॉस ऑफ होप इन अट्रैक्शन टू ब्रेक डाउन इन वनस मोर ऑफ द डिफाइनिंग क्वालिटीज ऑफ वन सेल्फ और आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल, a singer who loses the ability to sing may disappear if she has nothing else to fall back on, nothing really on there for identify. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये वाले कंसेप्ट उसमें है. डिसअपियर कंटिन्यू ये वाला जो है उसने दिया है. एक्चुअली ये जो opposition to positivism and rationalism. Extensive opposite definitions of human beings as a primary rational and therefore oppose positivism and rationalism. Actually asserted that people actually make decisions based on the subjective meaning rather than pure irrationally. Kierkegaard advocated जो Kierkegaard है उसने बोला है advocated rationally as means to interact with the objective world is that in the natural science, but when it comes to an existential problem reason is ineffectual. Human reason has a boundaries. So इसमें ये बोला उसने. उसमें और भी बहुत सारे हैं जैसे ये like Kierkegaard certain new problem saw problems with rationally calling it form of the bad path and attempt to solve those structures. तो उसमें ये आप देख सकते हैं इसने कौन से पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए हैं इस वाली फिलासफी ने. तो ये आप देख सकते हैं. उसमें एक्जिस्टेंशियलिज्म जो साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपी है, इसमें भी थोड़ा बहुत दिया गया है कि कैसे ये इन्होंने किस में काम किया है. माइंड के बारे में उन्होंने बोला है एक्जिस्टेंशियलिज्म वालों ने. तो ये आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो ये आप पढ़ सकते हो और इसका देख सकते हो उन्होंने क्या बोला. तो ये वाला है ह्यूमन माइंड कंटिन्यूज है इस लेक्चर में. जो इम्पॉर्टेंट है 4 वर्ल्ड्स के बारे में. थिंकर्स सीक टू अवॉइड रिस्ट्रिक्शन मॉडल दैट कैटेगराइज और लेबल पीपल. इनस्टेड दे लुक फॉर द यूनिवर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस कल्चर. देयर इज नो एक्सटेंसिव पर्सनैलिटी देयरफॉर थ्योरी व्हिच divides humanity into their types or reduces people to core components. Instead there is a description of the different levels of experience and existence with which the people are inevitably confronted. तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें है. One can distinguish और basic dimensions of human existence, the physical, the social, the psychological and the spiritual. तो ये वाला भी पोर्शन उन्होंने बोला है. फिर उनका जो इम्पोर्टेंट है फिजिकल डायमेंशन के बारे में. तो इंसान क्या करते हैं जो रिलेट टू देयर एनवायरनमेंट एंड टू गिव देयर नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम. दिस इज द एटीट्यूड टू द बॉडी दैट दे हैव. तो ये स्ट्रगल ऑन द डायमेंशन जनरल टर्म्स बिटवीन द सर्च फॉर द डोमिनेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है वाइल पीपल. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है.
सोशल डायमेंशन के बारे में भी बोला है उन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो इसको यहाँ से। फिर उन्होंने बोला है साइकोलॉजिकल डायमेंशन के बारे में, individuals relate to themselves in the way they create a personal world. This definition includes a view about their own character, their past experience, and their future possibilities. People search for the sense of identity, a feeling of the being substantial and having a self-activity, self-affirmation, a resolution, and possibility, surrender, and yielding are important quality here. Facing the final resolution of the self that comes with the personal loss and the facing the तो ये important है, उन्होंने बोला है। उन्होंने जो लास्ट वाला है स्पिरिचुअल डायमेंशन पे भी जोर दिया है। तो ये सारा था existentialism पर। Hope that you would have enjoyed it and you will read it at your home. Go and listen these videos and get the information from this. Thank you.